गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज मेरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से प्रैक्टिस लेक्चर 3। तो बच्चों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से प्रैक्टिस लेक्चर 3। इस पे आज मेरा पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट? व्हाट इज द इफेक्ट? डीएनए कॉपिंग का क्या प्रभाव पड़ता है विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, जो कि परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, उसका प्रभाव क्या पड़ता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस पर। ओके, तो बच्चों, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन if DNA copying is not accurate, not perfectly accurate, then variation occurs. इसमें क्या होगा? Variation उत्पन्न होने लगेंगे। That is, these in turn allow few individual of a population to survive of in an altered Nike. इससे क्या होगा कि कुछ population survive करेंगे and becomes the basis of evolution over time, और ये एक evolution का क्रम होगा। Such variations are useful for survival of species. इस तरह के वेरिएशन जो हैं वो यूजफुल होते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज के लिए। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग? तो इफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, आंसर है अगर डीएनए कॉपिंग, इफ डीएनए copying is not perfectly accurate. If DNA copying is not perfectly accurate in the process of reproduction, in the process of reproduction, then variation occurs. then क्या हो जाएगा? variation occurs. Okay, if DNA copying is not perfectly accurate, then variation in the process of reproduction, then variation occurs. तो variations उत्पन्न होंगे। These in turn allow few individual, इससे क्या होगा? वेरिएशन होगा तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी कर पाए। ओके, तो ये क्या होता है कि अलाउ फ्यू इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन टू सर्वाइव इन अल्टर्ड नाइके, इस बदले हुए नाइके में कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएंगे और वो एवोल्यूशन के आधार हो जाएंगे। ओके, तो these in turn allow, ये क्या होता है? These in turn allow few individual, not all, few individual, these in turn allow few individual of a population to survive, survive in an altered Nike, देखिए, इससे क्या होगा कि जैसे वेरिएशन उत्पन्न होगा, इससे क्या होगा? इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन उस नाइके में सरवाइव कर जाएंगे। ओके, इन एन अल्टर्ड नाइके, in an
अल्टर्ड ओके कि इफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, अगर डीएनए कॉपिंग परफेक्टली एक्यूरेट नहीं रहा इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो क्या उत्पन्न होगा? वेरिएशन ऑकर्स, दैट इज म्यूटेशन, वेरिएशन ऑकर्स। ये क्या करेगा? वेरिएशन जब उत्पन्न होगा तो नॉट ऑल इंडिविजुअल बट दिस इन टर्न अलाउ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन टू सर्वाइव इन एन अल्टर्ड निके। ओके, कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव करेंगे एंड दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन एंड बिकम्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन एंड becomes the basis of evolution, और ये विकास इवोल्यूशन का आधार बन जाएंगे एंड ओवर टाइम। ओके, एंड इवोल्यूशन। Such variation are useful for the survival of species। इस तरह के वेरिएशन, such variation are useful for the survival, such variation are useful for the survival of species। ओके, इस तरह के वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वाज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अगर ऐसा होता है तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर डीएनए कॉपिंग एक्यूरेट नहीं है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वेरिएशन ऑकर होगा। इस वेरिएशन से क्या होगा? कुछ ऑर्गेनिज्म जो है पॉपुलेशन में सर्वाइव करेंगे अपने अल्टर्ड लाइकी में एंड बिकम्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ओवर टाइम। सच वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, और इस तरह के वेरिएशन जो है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभप्रद है। नेक्स्ट है हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट रहता है थ्रू ईच न्यू जनरेशन। प्रत्येक न्यू जनरेशन में डीएनए का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स, और ये दो इंडिविजुअल्स के डीएनए कॉपीज का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू ईच न्यू जनरेशन। कैसे डीएनए का अमाउंट जो है प्रत्येक जनरेशन में कांस्टेंट रहता है, व्हिच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ओके, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है? तो बच्चों इसमें होता क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स आइदर मेल और फीमेल, ये ऑकर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑकर्स द combination of what? The combination of DNA copies combination of DNA copies of two individuals मेल और फीमेल, कोई भी मेल एंड फीमेल male and female occurs during sexual reproduction, occurs during sexual reproduction, occurs during sexual reproduction। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल क्या होता है कि वो जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपीज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स कब होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स कब होते हैं? ऑकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, हम लोग जैसे कि रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, हम लोग के गैमीट जो है टेस्टिस में बनता है गैमीट, तो गैमीट फॉर्मेशन इज ए रिडक्शन डिवीजन। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर बहुत मेल एंड फीमेल गैमीट में वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और ये गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज करते हैं और ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करते हैं। तो व्हाट हैपेंस कि ड्यूरिंग रिडक्शन डिवीजन क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन हैव द क्रोमोसोम नंबर इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। जो गैमीट्स जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, बिल्कुल 50%। ओके, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, reduction division during gamete formation. Now, reduction division, gamete formation में reduction division, reduction division during gamete formation, reduction division during gamete formation, गैमेट फॉर्मेशन के समय रिडक्शन डिवीजन, और उस रिडक्शन डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। तो हाफ्स द क्रोमोसोम नंबर, हाफ्स द क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल, इन both male female, okay, male and female। रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, और मियोसिस के दौरान ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और एंड व्हिच हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, these two gamete in both male and female गैमेट, गैमेट में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, आधे होते हैं, मींस वन सेट, दैट इज गैमेट कंटेन्स वन सेट, जबकि एक सोमैटिक सेल्स जो है वो डिप्लॉयड, मतलब कि 2n, दैट इज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और गैमेट में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ और इट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये मियोसिस के दौरान ही ऐसा हो पाता है। ओके, The two gamete fuse during fertilization, मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं, these two gamete fuse during the fertilization and the original number of chromosome is restored. These two gamete fertilize and original chromosome number is restored. Original chromosome number is restored, और तब जाके क्रोमोसोम की नंबर जो होती है रिस्टोर होती है, एज इन केस ऑफ ओरिजिनल को रिस्टोर्ड इन द ऑफस्प्रिंग, in offsprings. By this way, the amount of DNA remain constant in each new generation. प्रत्येक न्यू जनरेशन में जो है DNA अमाउंट इसी तरह से कांस्टेंट बना रहता है। DNA is deoxyribonucleic acid, and इसी तरह से DNA का नंबर जो है, by this way the amount of DNA remain constant. By this way, the amount of DNA जो DNA का अमाउंट होता है remains constant in each and new generation. DNA remains constant in each new generation. Each new generation.
इसी तरह से डीएनए का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट बना रहता है प्रत्येक जनरेशन में। एक बार फिर बच्चों आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीएनए कॉपी इज नॉट अ परफेक्टली एक्यूरेट। डीएनए का कॉपी जो है वो परफेक्टली अगर एक्यूरेट नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो क्या उत्पन्न होगा? वेरिएशन विल ऑकर। अगर डीएनए कॉपी परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हुआ रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वेरिएशन उत्पन्न होंगे। ये क्या होगा? ये अलाउ करेगा इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन टू सर्वाइव इन एन अल्टर्ड नाइकेज। इससे क्या होगा? इस बढ़ते हुए परिवेश में क्या होगा कि इंडिविजुअल को सर्वाइव करना होगा, जो कि एक इवोल्यूशन का आधार होगा। सच वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। इस तरह के वेरिएशन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज of two individuals, male and female, occurs during sexual reproduction. DNA का combination जो होता है, the combination of DNA copies of two individuals occurs during the sexual reproduction. That is, ये sexual reproduction के दौरान ही होता है। क्योंकि meiosis के दौरान your chromosome number will become half of the original. That is the reduction division. At the time of reduction division, meiosis के two parts होते हैं, meiosis first, meiosis second, and reduction division में क्या होते हैं कि chromosome number, that is in case of spermatogenesis, the formation of sperm which is a male gamete, उस समय क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। फीमेल also at the time of oogenesis, उनके ओवम में भी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। तो ओवम रिलीज करेगी ओवरी से फीमेल that have the half set number of chromosome, और स्पर्म जो मेल से निकलेगा that will also contain half set of chromosome, मतलब half set DNA इधर, half set DNA इधर। After fertilization these two sets क्या होगा कि these two gametes fertilize and original chromosome number is restored। और ये दो गैमेट जिसमें 23 chromosome in female and 23 chromosome in male, these two sperm contain 23 और ovum contain 23, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे। स्पर्म एंड ओवम अंडरगो फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट व्हिच रिस्टोर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑफस्प्रिंग, और इससे ऑफस्प्रिंग में क्या ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिस्टोरेशन हो जाता है। इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन डीएनए जो होता है वो कांस्टेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज डीएनए। पहले सवाल है कि डीएनए क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म इट्स। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ओके। चलिए चलते हैं डीएनए। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज डीएनए। क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए ए। सेकंड क्वेश्चन है ये व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है? When cell reproduces, when cell reproduces, okay? When cell reproduces, what happens? When cell reproduces, what happens to its DNA? What happens to its DNA? उसके डीएनए में क्या होता है? न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपी सी इज न्यूली फॉर्म्ड। तीनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। न्यूली फॉर्म्ड
DNA copies, newly formed DNA copies may not, newly formed DNA copies may not be identical, not be identical at times, identical at times. Give one reason, one reason, एक रीजन देना है. ओके, गिव वन रीजन, गिव वन रीजन. ओके, तो बच्चों डीएनए इज ए पॉलीमर, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए इज ए पॉलीमर, डीएनए दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, इज ए पॉलीमर, इज अ पॉलीमर, ये क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर मेड अप ऑफ a large number of nucleotide, a large number of nucleotides, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट, large number of nucleotide units. Okay, it is carries genetic information, इसका काम होता है, it carries genetic, it carries genetic information from generation to generation, genetic information from generation to generation, generation to डीएनए एक पॉलीमर है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और ये क्या होते हैं कि कैरियर होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस, बी इज व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस व्हाट हैपेंस टू इट्स डीएनए. ओके, व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस, बी इज, दिस इज आंसर है ये ए पार्ट का. अब बी, when cell reproduces, जब सेल रिप्रोड्यूस करता है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स, क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन occurs, DNA replication occurs which forms two similar copies of, forms two similar copies of, forms two similar copies of DNA, two similar copies of DNA, जो डीएनए का दो सिमिलर कॉपी का को निर्माण करता है. ओके, C is newly formed DNA copy may not be identical. Similar है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है. At a time, give one reason. DNA का कॉपी जो है वो क्यों नहीं है सिमिलर, इसके बारे में. That is error in DNA copying due to incorporation of wrong nucleotide. Wrong nucleotide के साथ अगर DNA का incorporation हो जाता है तो वहाँ क्या होता है कि copies may not be identical. Okay. That is the process of copying the DNA. C का आंसर, the process of copying the DNA leads some variation each time. Lead some variation each time.
देखिए बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए क्या करता है कि लीड सम वेरिएशन ईच टाइम, प्रत्येक समय में कुछ वेरिएशन लाता है। एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपीज जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। एज अ रिजल्ट as a result, the DNA copies produced as a result the DNA copy produced are similar to each other, are similar, ये क्या होते हैं, similar to each other, एक दूसरे से similar होते हैं, but sometime may not identical, but sometime may not identical, ओके, समटाइम ये आइडेंटिकल नहीं होते। तो बच्चों यहाँ क्या है, व्हाट इज डीएनए? डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इट इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ये पॉलीमर्स होते हैं। डीएनए साफ साफ कहें तो न्यूक्लियोटाइड के ये पॉलीमर्स होते हैं। ओके, यूनिट इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक गुणों को, दैट इज दे टेक कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, आने वाले जनरेशन तक। ओके, सेकंड इज व्हिच व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस व्हाट हैपेंस टू डीएनए, सेल रिप्रोड्यूस जब करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। ओके, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस, व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स व्हिच forms two similar copies of DNA, डीएनए के रेप्लिकेशन से डीएनए के ही दो सिमिलर कॉपीज तैयार होते हैं। थर्ड इज न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज may not be identical at a time, give one reason, the process of copying the DNA, उससे क्या होता है, कुछ वेरिएशन आता है एंड ईच टाइम, जिसके कारण डीएनए कॉपी जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं बट सम टाइम मे नॉट बी आइडेंटिकल, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। इसके पीछे भी है कि जो एरर होते हैं, एरर जो डीएनए में आता है, डीएनए कॉपी के दौरान जो एरर आता है ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की इनकॉर्पोरेशन के कारण आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस पेयरिंग, उसमें पढ़िएगा आप हायर क्लास में कैसे कैसे पेयरिंग होता है, तो उसके बारे में आप भली भांति समझ पाएंगे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज डीएनए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। अब बच्चों नेक्स्ट वी आर स्टडिंग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और इस ऑर्गेनिजम्स हाउ डू दे रिप्रोड्यूस का ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर है थर्ड। अब पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन जो होता है कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हर लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड, reproduction is one of the most important, reproduction is one of the most important, is one of the most important, one of the most important characteristics of living beings, of living beings,
beings. Give three reasons in support of the statement. Give three reasons in support of the statement. In support of the statement. ओके बच्चों, तो रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हर लिविंग बीइंग का. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग. गिव थ्री रीजन, आपको तीन रीजन दे रहे हैं. गिव थ्री रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के लिए तीन कारण बताइए. तो बच्चों, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन. फर्स्ट आंसर इज रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज reproduction is one of the most important characteristics of living being because क्यों ये? Because first is reproduction is necessary to maintain continuity of a species. Reproduction क्या है? Very important है because species की continuity इसी reproduction से कायम रहती है. Reproduction is necessary. Reproduction is necessary to maintain. Necessary to maintain the continuity of a species. Continuity of species. स्पेसीज के कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है. रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज. ओके, रिप्रोडक्शन क्या है? पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है. रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू reproduction is linked to the stability, linked to the stability of population of a species. Population of a species, okay, which occupy well-defined place, which occupy well-defined places called 9K, called in the ecosystem. ये बात लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन लिंक्ड होता है क्या चीज से? स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज. स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज इज थ्रू रिप्रोडक्शन. ओके, which occupy well-defined places called niche in the ecosystem. एक well-defined position में located होते हैं जिसको niche कहते हैं और ecosystem. Third is well-defined place, that is in ecosystem. Variation created, इसमें जो variation होता है, variation third, variation created during reproduction, reproduction are responsible for the survival of a species. Survival of a species. Okay, in case
of an adverse change in environment, in case of adverse change in an environment, in sorry adverse change in the environment, in the environment and evolution, and evolution। ओके बच्चों, देखिए वेरिएशन जो क्रिएट होता है रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या बनता है, बनाता है हमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन एनी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड इवोल्यूशन। बहुत तरह का अगर एनवायरमेंटल कंडीशन में बदलाव है तो इवोल्यूशन जो है दिस विल द वेरिएशन जो है ये क्या करता है कि सर्वाइवल में हमें बेनिफिट पहुंचाता है, दैट प्रोवाइड बेनिफिट इन द सर्वाइवल। हमें सर्वाइवल में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज इन केस ऑफ एडवर्स चेंज। कोई भी एडवर्स बदलाव आता है एनवायरनमेंट में तो उसके प्रति हम क्या होते हैं कि हमारे सर्वाइवल रेट को बढ़ा देता है। दिस इज व्हाट हियर वेरिएशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का, बिकॉज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, बिकॉज डेथ एंड बर्थ आर कंटिन्यूअस गोइंग ऑन। तो इससे क्या होता है, अगर डेथ ही होता रेगुलर और नो न्यू बॉर्न विल कम, देन दिस विल नॉट बी द वी कैन नॉट मेंटेन आवर स्पीसीज, हम अपने स्पीसीज को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सेकेंड, रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से भी लिंक्ड है ऑफ स्पीसीज व्हिच ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेस कॉल्ड निचे इन द एनवायरनमेंट, इन द इकोसिस्टम। वेरिएशन जो क्रिएट होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए ये वेरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन we can adjust due to this variation। ये वेरिएशन हमें क्या होगा, हमारे सर्वाइवल को रेट को बढ़ा देगा। ओके, सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाते हैं वेरिएशन। अब बच्चों ये चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का प्रैक्टिस लेक्चर 3 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।